So in last class, we were studying this concept, that tangent from external point and an important quadrilateral based on which previous year में question already पूछा जा चुका है. And I discussed these four concepts that these kind of questions can be framed directly in the exam. And I also discussed one more concept, that is locus of point of intersection of perpendicular tangents. So if the tangents are perpendicular, this point also lies on a circle whose center is same as the circle, as the center of the original circle to which the tangents are drawn. And the radius of this circle will be, that is length CP. So that will be R root 2. So that is how we define. और हम इसको बोलते हैं डायरेक्टर सर्कल. तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं. ऑलवेज रिमेंबर, इस तरह से भी क्वेश्चन में लिखा हुआ हो सकता है, that is chord of contact subtends 90 degree angle at the center, because we know अगर यहाँ पे अगर 90 degree है, so the here angle also will be 90 degree. So if from an external point two tangents are drawn, there is a chord of contact, it subtends 90 degree angle at the center of the circle. The question can be written like this also. Then we have to find the locus of the external point, that is also the same circle, that is the director circle. अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पे. This is a good question. See how we solve this. So this is the question which have been given to us. We have to find the range of A. What is A? A is a point. A comma 0 is a point. The angle theta between pair of tangents drawn from this point, that is A comma 0, to the circle satisfy the condition theta belongs to pi by 2 to pi. So theta is the angle between pair of tangents. So this angle is theta. So if we have to define the condition on A such that this angle is between pi by 2 to pi. So first method what we can do is just a basic concept, that we will apply the condition on theta between pi by 2 to pi. What we can define related to A, this point is A comma 0, we can define the length CP. Radius हमें पता है, that is 1. So we can write here that 1 upon CP, that will be equal to perpendicular upon hypotenuse, that is sine theta by 2. Now CP will be what length? Distance between point C and P. So that will be nothing but magnitude of CP, that will come out to be magnitude of A. So this will become mod of A, because we don't know if the point coordinate A is positive or negative. Now we have been given condition on theta, that theta belongs to pi by 2 to pi. Based on this, we can apply the condition on sine theta by 2. अगर theta pi by 2 to pi है, what we can say? We can say theta by 2 is between pi by 4 to pi by 2. So now we can say sine theta by 2 will be between sine pi by 4 to sine pi by 2, because sine function is always an increasing function. So this value will always increase. This value will lie between these 2 points. So based on this, we can apply condition that this is sine theta by 2. So we can apply that 1 by mod A is between 1 and sine pi by 4 is, that is 1 by root 2. So based on this, you can define the condition on A by solving this inequality. This is the first method. this हम इस question को solve कर सकते हैं. Second method is what? We know for theta is equal to pi by 2. For theta is equal to pi by 2. That is point of intersection of perpendicular tangents. Let me just write it here. We know for theta is equal to pi by 2, because we have studied this. This point lies at how much distance? At root 2 times r distance. So for positive side of x-axis, if I am defining A, so the A will be, for theta is equal to pi by 2, A will be equal to root 2 multiplied by r. So that will be the value of A. This is what we have already studied. Now if I will take this point away from here, if I will take this point to this side. Now I am considering this value for this angle is pi by 2. So this is for pi by 2 I am considering. For pi by 2 we know the point should be root 2 comma 0. Now if I will take this point away from here, अगर मैं यहाँ पे value A की root 2 से बढ़ा देता हूँ, increase करता हूँ इस direction में. So if the value of A will increase, this angle will definitely decrease. That you can see. क्योंकि अगर हम यहाँ बढ़ाएंगे तो एंगल ये हो जाएगा और छोटा हो जाएगा. तो हमें दिख रहा है कि ये जो एंगल है, this value will decrease and it will decrease from pi by 2 to 0. If you will take this to infinity, there won't be any tangent. So the angle, it will be a very far away point, the angle will decrease definitely. So in this direction, theta will be less than pi by 2. That we can see.
angle between tangents. At this point, for r equal to a equal to r root 2, here theta is nothing but pi by 2. And now if you will go in this direction, what will be theta? Theta will be greater than pi by 2. The value of theta will definitely increase. तो अब अगर हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया? आई विल टेक दिस पॉइंट नियरर टू द सर्कल. इफ आई विल टेक दिस पॉइंट हियर, 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 the angle will definitely increase, that you can see. Now when the point P will reach here, when it will just touch the circle, so what will happen? There will be only one tangent. There won't be such thing like angle between tangents. Or you can say both tangents are same. The angle will become what? The angle will become here 180 degree. So this is for theta is equal to pi. So if I will decrease the value of a, I will bring it to here. It means the value of a will become 1. For a equal to 1, the angle between tangents will be pi. If I will increase here, decrease the theta to pi by 2, it will become a equal to root 2. So we can see this is the region in which a can lie. So the value of a can be, if a is between 1 to root 2, that we can see. In that case, the theta will be between pi to pi by 2 or pi by 2 to pi. Or similarly, on the opposite side, because यहाँ पे तो हमने positive x-axis पे लिया, and on negative x-axis we can say a will be between minus root 2 to minus 1. So this is how you can define the value of a directly by looking at this. तो वो जो diagram है, it becomes important. That is what you should know. Now the question on this can be framed कि अगर suppose आपको इस point का locus निकालना है, you have to find the locus of this point, such the angle between tangents is nothing but 60 degree or 120 degree. The question can be framed like this also. Suppose there is a question, locus of P, such that theta is equal to 120 degree. If theta is 120, there is no problem. We will just apply the condition 1 upon Cp is equal to sine 60, because here it will be sine 60. So we can apply R upon Cp equal to sine 60. What is sine 60? Root 3 by 2. So the Cp will become 2R by root 3. And we will apply the condition h comma k distance from origin. That will h minus 0 whole square plus k minus 0 whole square is equal to 2R by root 3 whole square. So this will be the locus. So based on this, different questions can be framed. Whatever the angle here, for any angle here, the locus will be a circle, but the radius will change. If the angle is pi by 2, we know the radius r root 2. If the angle will increase from pi by 2, it will go this side. We know the distance will be more than r root 2. And if the value will bring here, तो यहाँ पे क्या होगा? Angle will be between pi by 2 to pi. Yeah, if angle will increase here, angle will decrease here. Okay. So here the angle is 120 degree. तो अगर मैं यहाँ पे लेके आऊंगा 120 degree, definitely this will decrease. तो इस तरह से हम locus के क्वेश्चन इस डायग्राम पे बना सकते हैं. Next, take an illustration. The question is, if the straight line intersect the circle at points P and Q, then find the coordinate of point of intersection of tangent at P and Q. This is a very simple question. Based on this, we will see one more question. तो अब हमें यहाँ पे point of intersection निकालना है. This is the point we have to find. तो यहाँ पे हम ये नहीं करेंगे that we will first find point P, point Q, then we will write the equation of tangents, then we will find the intersection. वो क्या होगा? एक lengthy method होगा. That is a lengthy method. We won't apply that method. So you always have to look for this diagram. If you see any diagram in which tangents are drawn from external point and you see a chord, that is only but nothing but chord of contact. तो हमें chord of contact की equation को ही use करना होता है. हमेशा ध्यान रखेंगे. This is nothing but chord of contact. तो अब हम क्या करेंगे? जो इंटरसेक्शन पॉइंट हमें निकालना है, उस पॉइंट के लिए, इस सर्कल के लिए chord of contact की इक्वेशन निकलेंगे. So we know for external point chord of contact is t equal to 0. How you will write t equal to 0? This is x1 y1. You will put xx1 y1, so it will become xh plus yk is equal to 25. This is how you will write this equation. अब जो मैं मेथड बताऊंगा, it's a very common method. This is the equation which we have already written, and this is the equation of chord which we have been given. So this is chord of contact, and we have been given x minus 2y plus 1 equal to 0. And now we will compare these two equations. It's a very common and very powerful method to compare the equations of a chord. क्योंकि हम chord की equation को अभी देखेंगे. This is chord of contact. The same equation of chord can be written if it is midpoint is given also. So we can compare these two equations and we can find the intersection point. Usually question won't come to find intersection point.
हाउ द क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड आई विल टेल यू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ यू विल कंपेयर दीस टू यू कैन इजीली फाइंड h and k, h upon 1 comparing coefficient of x, k upon -2 comparing coefficient of y, and -25 by 1. So this is how you can solve this question. Always remember this type of question can be framed in parabola, ellipse, hyperbola, because chord of contact in parabola, ellipse, hyperbola उसमें भी सेम ही इक्वेशन होती है t equal to 0. So same question can be framed there also. So in parabola, ellipse, hyperbola, if you see this diagram, tangent from external point and some question is framed upon chord, any question. सर्कल में तो क्या है, वो एक इंपॉर्टेंट डायग्राम जो कि मैंने बताया था, दैट quadrilateral it exists, but in remaining conic section that diagram is not there. तो उसके केस में क्या होता है, हमेशा कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन का यूज आके और कॉर्ड की अगर इक्वेशन दी हुई है कंपैरिजन करने का यूज आता है, लाइक दिस मेथड कैन बी अप्लाइड देयर आल्सो. तो ये सिमिलर क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड इन पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला. यहाँ पे पैराबोला की इक्वेशन भी हो सकती है, इलिप्स की भी हो सकती है, हाइपरबोला की भी हो सकती है. नाउ वी सी द यूज ऑफ दिस. द टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू दिस सर्कल फ्रॉम एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन दिस लाइन. सो वी हैव ड्रॉन द सेम डायग्राम. एक सर्कल पे हमने दो टेंजेंट ड्रॉ करी, बट दिस पॉइंट इज नॉट गिवन टू अस एंड दिस कॉर्ड इज आल्सो नॉट गिवन टू अस. Previous question में we have been given this chord, we have to find this point. In this question we have been written कि point P is lying on this line. तो ये point P इस line पे lie करता है, that is 2x plus y minus 4 equal to 0. Then we have to define this chord of contact passes through a fixed point. अब last class में I told you that if a line is passes through a fixed point, because chord of contact is nothing but this is a line. So for a line to pass a fixed point, you have to define the equation of line in the form of L1 plus lambda L2 equal to 0. So this is how you will solve this question. So what we will do is we will write the equation of chord of contact, और वो जो इक्वेशन है that will come into this form. तो उस तरह से हम इसको क्वेश्चन को आगे करेंगे सॉल्व. तो what we will do is हम chord of contact की इक्वेशन लिखेंगे for any point on this line. So you can take any point in this line, like suppose h comma के हमने point ले लिया, and we will write the equation of chord of contact. तो COC chord of contact की इक्वेशन लिखेंगे for h comma के, that will come out to be xh plus yk equal to 1. Okay, we have written this. But अब अगर अपने को पता है कि यहाँ पे इस इक्वेशन में there should be one variable lambda or single variable except x and y. Here there are two variables h and k, so you have to replace one of the variables. उसके लिए यहाँ पे ये इक्वेशन दी हुई है. The point will satisfy this equation. तो हम यहाँ लिखेंगे 2h plus k minus 4 equal to 0. So now using this equation we will substitute here, or what you can do is you can compare this equation with this, जो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था फिक्स पॉइंट से हम कैसे निकालते हैं. तो यहाँ पे अब एक तरीका तो ये है, व्हाट आई विल डू इज आई विल पुट द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 4 minus 2h. दिस इज वन ऑफ द वेज आई विल पुट हियर. सो हियर इट विल बिकम xh plus 4y minus 2hy equal to 1. दिस वन. सो व्हाट वी विल गेट इज, अगर हम यहाँ पे लेके जाएंगे तो आई कैन सी h here, that will be your lambda. So I will take h common, the equation will become x minus 2y, and I will take 1 to this side, it will become 4y minus 1. So this is your equation, this is your lambda, this is your L2, this is your L1. So now this chord of contact, it will pass through intersection point of x minus 2y equal to 0 and 4y minus 1 equal to 0. You can find the intersection point easily. This is the next step to solve the question. So this is your method 1 after this. Second method is what? Just compare. Which equation? This equation xh plus yk minus 1 equal to 0. Compare this with this equation. Now to compare, usually what I do is I make the constant term same. It becomes faster to compare. So constant term यहाँ पे क्या है, 4 है, यहाँ पे 1 है, so I will make it 1. I will divide by 4. So the other equation I will write 2 by 4h plus k by 4 minus 1. Now if you will compare, you can easily tell the point. What will be the value of x? X will be 1 by 2, y will be 1 by 4. So the point is 1 by 2 comma 1 by 4. Because you see, if you will put 1 by 2 comma 1 by 4, it will satisfy this equation of chord of contact. ऐसे भी हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हैं. These are the two methods to find fixed point from which a line passes.
तो कोई भी क्वेश्चन लाइन कैसे आता है कि जिसमें लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास करती है, इट मींस यू हैव टू चेंज दैट लाइन इनटू L1 plus lambda L2, and this is a quite common type of question which can be framed. We will also see a question based on this, जिसमें external points से if we are drawn two tangents, we will see the locus of chord of contact, locus of midpoint of chord of contact, but for that we will see chord with midpoint next. अब इसमें next question क्या है? This is the question. The locus of point of intersection of tangent to this. So we are drawing two tangent to this circle, okay, and their point of intersection. This is what we have done already. At the extremities of a chord of a circle which touches the circle. तो अब see, it becomes a big question. तो आपको इसकी इंग्लिश समझ में आनी चाहिए. We are drawing two tangents to this circle, where we are drawing two tangents at the end of chord of a circle. That is the same circle. So we are drawing two tangents to chord to this circle, okay, and locus of point of intersection of tangent at the extremities of chord of a circle, and these tangents, it also touches this circle. Just a minute. Okay, sorry. So what we have written is locus of point of intersection of tangent to this circle. So this circle we are drawn two tangents, उसके point of intersection का locus निकालना है, so that we have put h, k. अब हमें ये लिखा हुआ है, कहाँ पे ड्रॉ करी है हमने? We have drawn at extremities of a chord. इस chord के end points पे हमने tangents ड्रॉ करी है. Now this chord is touching this circle, which is related to here. This chord, the chord is touching another circle. So this chord is touching another circle. This is that circle, so we can. This chord is touching this circle. Okay. So what we can do is we see a chord, we see a circle, and it is touching. So what we can say, distance from center equal to radius, right? तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इस chord के लिए बोलेंगे distance from, because we have to apply this condition. ये तो मैंने हमेशा बोला है कि like if a tangent is given, you always have to apply the condition distance from center equal to radius to a circle. Now the center of circle is what? A, 0 and A, 0, and radius will also be nothing but A. तो अब अगर हम यहाँ पे इसके लिए अगर कंडीशन लगाएंगे, दिस इज द कंडीशन वी हैव टू अप्लाई, सो दिस इज द कंडीशन वी हैव टू अप्लाई. अब इसके लिए हमें इस कॉर्ड की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, नहीं तो हम कंडीशन कैसे लगाएंगे? नाउ हाउ वी कैन राइट दिस कॉर्ड इक्वेशन, बिकॉज दिस इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. सो द इक्वेशन वी विल राइट हियर from external point, so it will become xh plus yk equal to a square. अब हम इसमें कंडीशन लगाएंगे, डिस्टेंस कहां से? डिस्टेंस फ्रॉम a, 0 is equal to a. So we'll put a, put y 0, so it will become ah upon under root of h square plus a square mod that is equal to a. हाँ समीर बोलो. सर वहां पे जो आप लिए A, 0 सेंटर, वो सेंटर तो 0, 0 ना होगा, वो बड़ा सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर. नहीं वो नहीं होगा, नहीं होगा. तो वो सेंटर आप A, 0 कैसे ले लिए? अरे इसको सर्कल को यहां बनाने की जरूरत नहीं है, सर्कल को वी कैन मेक हियर आल्सो, it doesn't matter. What we know is this line touches a circle, that is what we know, and we know the equation of this circle. Okay, yes sir. so we have to find, अगर मैं इस क्वेश्चन को सही पढ़ रहा हूं तो यहाँ पे इसका ये मतलब है कि the chord is touching this circle, but if you apply this condition you will get the answer. नहीं, इससे तो कुछ और ही आंसर आ रहा है, इसका मतलब हम क्वेश्चन शायद गलत पढ़ रहे हैं. Locus of point of intersection of tangents to this circle at the extremities of chord of a circle. chord के एंड पे हमने बनाया है tangents, इसका point of intersection का locus. We have written this equation which touches this circle. तो ये सर्कल का सेंटर है a, y कोऑर्डिनेट इज 0, तो a, 0 is equal to a. हाँ, यहाँ पे ये आएगा ah minus a square, सही लिखा है. So we can make the circle here also, ऐसा बना लो, बड़ा बना लो, कैसे ही बना लो. We know that this line is touching a circle whose center is a, 0 and whose radius is a.
तो इसके लिए अपने को इस लाइन के लिए डेफिनेटली ये कंडीशन लगानी पड़ेगी, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इक्वल टू रेडियस। तो अब हम इसको यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो ए से कैंसिल हो जाएगा, विल गेट h माइनस a होल स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। तो एक ऑप्शन तो देखो ऑप्शन नंबर 3 है, एंड इफ यू विल रिमूव होल स्क्वायर इट विल बिकम h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2h इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। तो यहाँ पे h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल, इट विल कम k square is equal to a minus 2h. So this will be a parabola. तो हम इस तरह से यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के क्वेश्चन इस तरह से और बनाए जा सकते हैं। इक्वेशन इज वेरी सिंपल, देयर कैन बी एनी कंडीशन ऑन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पे लिखा हो सकता है इट पासेस थ्रू ए फिक्स पॉइंट, तो भी अपने को बाहर के हिसाब से इक्वेशन लिख के कंपेयर करना है। इट इज टचिंग ए लाइन, इट कैन बी रिटन द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पासेस थ्रू ए पॉइंट, तो भी हम क्या करेंगे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिख के उसमें पॉइंट सेटिस्फाई करा देंगे। इस डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इट कैन बी रिटन दैट दैट कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इज नॉर्मल टू सम अदर सर्कल, इट कैन बी रिटन दैट दिस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इज टेंजेंट टू ए पैराबोला। तो you can make any number of questions based on this, so that you should always know what is the condition you have to apply on that chord of contact. तो लोकस का अगर क्वेश्चन निकालना है इस तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं, बट सॉल्व सारे के सारे हम इसी तरह से करेंगे। नेक्स्ट है अपना यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। The point P moved on the circle x minus 4 whole square y minus 8 whole square equal to 20. Then it broke away from it and moving along a tangent to the circle. Cuts the x-axis at point minus 2, 0. अब देखो क्वेश्चन में क्योंकि x-axis दिया है, I will make coordinate axis. I will make a rough diagram with coordinate axis. Circle is given, this one. So this is circle जिसका सेंटर पता हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, something like this. Now एक पॉइंट जो है m वो इस सर्कल पे मूव कर रहा है, ध्यान रखेंगे this is moving on this circle. So this is a point which is moving on this circle. This point is here, here, here. इस तरह से ये मूव कर रहा है। अब this point broke away from it along a tangent. तो जैसे ही अपन इसको तोड़ेंगे, मतलब बेसिकली this is like a car, तो होता है ना सर्कुलर पाथ में कार चल रही है इस ट्रैक के ऊपर, फिर सडनली व्हाट इट डिड कि वो कार ने ट्रैक जो सर्कुलर था छोड़ के वैसे चली गई, इसके ऊपर टेंजेंट बनाते हुए इस डायरेक्शन में चली गई। कट्स दी एक्स एक्सिस एट पॉइंट माइनस 2, 0। तो अब ये जो आगे जाके जाएगी, ये यहीं पे मैंने क्यों ब्रेक करी, क्योंकि ये माइनस 2, 0 पे कट करवाना है। अगर इसमें लिखा होता कि ये प्लस 2, 0 तो मैं इस डायरेक्शन में डायग्राम बनाता इस तरह से। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन द सर्कल एट विच मूविंग पॉइंट इज ब्रोकन। तो बेसिकली हमको वो पॉइंट निकालना है एट दैट पॉइंट वेयर इट इज टेंजेंट टू द सर्कल, वो पॉइंट हमें यहाँ पे डिटरमाइन करना है। तो कंडीशन देखो क्वेश्चन में क्या लिखी हुई, कंडीशन ये लिखी हुई है कि ये जहां से मीट करता है और ये यहाँ जाके इस पॉइंट से पास करता है, वी हैव टू फाइंड दिस पॉइंट। तो अब अपन इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सो दिस इज व्हाट ए क्वेश्चन इज, दिस इज ए टेंजेंट टू द सर्कल पासिंग थ्रू एक्सटर्नल पॉइंट। देखो इसको दो तरह से अपन सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं टेंजेंट पासिंग थ्रू एक्सटर्नल पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा तो हम क्या करेंगे, टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं एंड वी विल सेटिस्फाई दिस एक्सटर्नल पॉइंट। टेंजेंट की इक्वेशन व्हाट वी विल राइट, टू एनी सर्कल y minus 8 is equal to mx minus 4 plus minus r, radius is 2 root 5 under root of 1 plus m square। मैंने तुम्हें ये पिछली क्लास में बताई थी इक्वेशन। ये क्या है, टेंजेंट की इक्वेशन है स्लोप फॉर्म में लिखनी। हमेशा मैंने बताया था वी हैव टू यूज दिस इक्वेशन इन स्लोप फॉर्म टू फाइंड m। इफ वी कैन फाइंड m तो हमें ये इक्वेशन यहाँ पे मिल जाएगी। बट क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या निकालना है, ये वाला पॉइंट निकालना है। सो मैंने तुम्हें बताया था पॉइंट फॉर्म का यूज कैसे आता है, टू फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इफ वी हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वी हैव टू यूज पॉइंट फॉर्म। तो अगर हम कैसे भी करके ये इक्वेशन निकाल लें, then we compare that equation to point form of the tangent to the circle, then we can find this point। तो अब अपन इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, it passes through minus 2, 0। So simply you just put these values and you solve for m. Once you will find m, you can find the equation of tangents। अब इसके लिए जब मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन, आई एम नॉट, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओ। कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने सिर्फ इसलिए बनाए बिकॉज देयर वाज ए पॉइंट गिवन ऑन एक्स एक्सिस, दैट इज व्हाई आई मेड कोऑर्डिनेट एक्सिस। नहीं तो आप ये डायग्राम ऐसे भी बना सकते हैं, एक सिंपल सर्कल है उस पे टेंजेंट बना के वो एक एक्सटर्नल पॉइंट से पास करती है, यू कैन मेक दैट डायग्राम। तो इसके लिए अगर आप सॉल्व करोगे तो m की दो वैल्यूज आएंगी बिकॉज देयर आर टू टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। सो इफ देयर विल बी टू टेंजेंट्स, so there will be 2 point of contact and you can find those point of contact by comparing with
कंपेयर विद पॉइंट फॉर्म ऑफ द टेंजेंट। दिस इज वन ऑफ द वेज जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, जो मेरे दिमाग में आया क्वेश्चन को देख के। अगर इफ आई डोंट वांट टू यूज दिस इक्वेशन विदाउट यूजिंग दिस, हाउ कैन आई सॉल्व? तो उसके लिए देखो अपने को क्वेश्चन में क्या क्या पता है। व्हाट वी नो इज कि दिस इज सर्कल and this is center of circle. We can draw from center of circle to any tangent perpendicular. We always have to draw this, ये तो मैंने हमेशा बताया, distance from center equal to radius। और इसी कंडीशन के हिसाब से ये इक्वेशन आती है सर्कल के लिए टेंजेंट की। एंड फ्रॉम हियर आल्सो वी कैन ड्रॉ द टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो अब तुम्हें वो दिख रहा होगा, दिस इज द सेम डायग्राम व्हिच वी हैव ऑलरेडी सीन। तो सर्कल्स में दो तीन इंपॉर्टेंट डायग्राम होते हैं जो बारी बारी रिपीट करते हैं। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का था, और एक ये था, और एक ये वाला डायग्राम जो मैंने क्वाड्रिलेटरल का पहले डायग्राम बनाया था। So this is an important diagram repeating again। तो यहाँ पे ये है। अब देखो अगर मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, आई विल नेम दिस पॉइंट्स एज पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ज्योमेट्रिकली व्हाट आई कैन डू टू फाइंड दीज पॉइंट्स। तो अब मुझे क्वेश्चन में क्या पता है, आई कैन फाइंड पीसी। पीसी वी कैन फाइंड, व्हाट इज पीसी? डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, बिकॉज आई नो, क्योंकि ये अगर हमारा डिस्टेंस आ जाएगा, दिस विल बी नथिंग बट 10। यू कैन फाइंड दिस डिस्टेंस, दिस इज 10। ओके, और हम यहाँ पे रेडियस तो बता ही सकते हैं, इसकी रेडियस कितनी थी, दैट इज 2√5। वी कैन इवन फाइंड पी ए ऑल्सो, दैट इज 100 minus 20, that will be √80। √80 will be 16 5 4√5, so PA will be 4√5। we can find these distances। so if we would have been told to find the area of this quadrilateral, तो हम वो भी निकाल सकते थे, because area of these two triangles का सम करके। वो अपने को पूछा नहीं, अपने को पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट पूछा है। तो अब मैं कैसे निकाल सकता हूं? तो अब इन एंगल से मैं क्या डिफाइन कर सकता हूं? इन एंगल से मैं ये वाला एंगल डिफाइन कर सकता हूं, दिस एंगल। If I will name this angle as theta, I can find this angle, because in a 90-degree triangle you can always find the angles। we can find these angles, right? Up till now I have not used coordinate axis। now how to use coordinate axis? to use coordinate axis we have to define slope or angle with coordinate axis, क्योंकि हम नहीं तो position कैसे निकाल। तो what I can do is I can define one more angle, which is this one। why I can define this angle? because I know these 2 points, so I can find anti-clockwise direction में what will be the angle। this is what we can define। तो अब देखो पॉइंट बी की अगर अपने को पोजीशन लिखनी है तो अपन कैसे लिख सकते हैं? बिकॉज वी नो दिस लेंथ, दिस विल बी 4√5, दिस इज आल्सो 4√5। so this angle is what? this is theta minus alpha। so if I will write this length from here to here, that will be 4√5 of cos of theta minus alpha, right? and we can write this height also, 4√5 sin of theta minus alpha। I can write these two values here। for point A what we can do, we will simply draw a perpendicular from here to the x-axis। तो ये perpendicular बनाएंगे फिर से कोई 90 डिग्री का ट्रायंगल, और हम इसकी पोजीशन भी लिख सकते हैं। दिस इज 4√5 थीटा प्लस अल्फा, cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा। तो पॉइंट ए के लिए अगर अपने को लिखना है, यू कैन राइट 4√5 cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा, 4√5 sin ऑफ थीटा प्लस अल्फा। उसके हिसाब से मतलब पॉइंट की पोजीशन ये नहीं आएगी। पॉइंट की पोजीशन तो अपन कैसे निकालेंगे? -2 से अपन कितना चल रहे हैं, 4√5 cos थीटा माइनस अल्फा। तो यहाँ पे अगर इसकी पोजीशन लिखनी है, -2 से वी आर कमिंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सो विल राइट -2 प्लस 4√5 cos of theta plus alpha, and y coordinate will be 4√5 sin of theta plus alpha। ओके, यहाँ पे अल्फा माइनस थीटा था, सॉरी। हाँ ये मैंने कर लिया, यहाँ पे आएगा अल्फा माइनस थीटा। इस तरह से अपन सॉल्व कर सकते हैं। अब अल्फा एंड थीटा वी कैन फाइंड, व्हाई वी कैन फाइंड? बिकॉज जो मेथड 2 है उसमें वी कैन फाइंड tan अल्फा। tan अल्फा इज द एंगल ऑफ द लाइन, दैट इज 8 minus 0 upon 4 plus 2, that is 8 upon 6, that is 4/3। ओके, तो अगर अपने को जैसे निकालना है sin थीटा माइनस अल्फा cos थीटा माइनस अल्फा, तो हम यहाँ पे tan थीटा प्लस अल्फा और tan थीटा माइनस अल्फा निकाल लो, उससे वो दोनों वैल्यूज निकाल लेना। you can find these values easily because tan a plus b, tan a plus tan b upon 1 plus 1 minus tan a tan b, and you can find this because in this triangle we can find tan theta also। तो tan थीटा अगर अपने को लिखना है, we can write 2√5 upon 4√5। देखो कितनी सिंपल वैल्यू, दिस इज 1/2।
वी कैन फाइंड दीज वैल्यूज, दीज आर वेरी गुड वैल्यूज। तो इस तरह से आप इसको सेकंड तरह से सॉल्व कर सकते हो ज्योमेट्री को यूज करके। हमेशा मैं बोलता हूं, ऑलवेज आई हैव टोल्ड यू दैट यू हैव टू यूज कोऑर्डिनेट एक्सिस। यू कैन यूज कोऑर्डिनेट एक्सिस टू सॉल्व द क्वेश्चन if something is given related to coordinate axis। अभी तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो आगे चलते हैं। सर एक बार tan अल्फा कैसे निकाले उसको रिपीट कर दीजिए ना। Tan alpha is basically, we know 2 points, point C and point P. So this is the line PC. Okay. So we can Yes, find the slope of this line. So tan alpha is nothing but slope of line PC, because in the diagram we can see alpha is angle in anti-clockwise direction with x-axis. तो anti-clockwise में जो एंगल होता है x-axis के साथ, ज्योमेट्रिकली this will represent the slope of the line, that is tan alpha. तो अगर अपने को 2 पॉइंट दिए हुए तो हम इसका स्लोप डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से एक अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है इस तरह के डायग्राम के ऊपर। हाँ रवि बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली उसमें ऑप्शन देते हैं? हाँ, यू विल बी ऑलवेज गिवन द ऑप्शंस, यू कैन चेक द ऑप्शंस। डिपेंड करता है, मतलब हो सकता है कि वो क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दे। जनरली आईटी में ऐसे क्वेश्चंस कम आते हैं जिसमें यू कैन चेक द ऑप्शंस, क्योंकि अगर तुम्हें ऑप्शन दिया होगा तो यू कैन चेक ना दैट PA विल बी परपेंडिकुलर टू AC, PP will be perpendicular to BC. You can even check that AC length will be equal to radius. वो अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, that will be point A and point B definitely, because it has to be radius, center from center of circle to point A, that is radius. और यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं that point A जो है सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस तरह की हम चीजें कर सकते हैं। एडवांस के जो पेपर होते हैं उसमें इस तरह की पॉसिबिलिटी रहती है कि ऑप्शन से भी हम लोग कुछ क्वेश्चन हाँ कर सकते हैं। अभी आज मैं जो असाइनमेंट बताऊंगा उसमें दिखाऊंगा, देखो आपको एक क्वेश्चन जो वहाँ काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन नहीं था, 3 क्वेश्चन थे ना पैराग्राफ के, जिसको अपन ऑप्शन देख के चेक कर सकते हैं, बट रेयरली ऐसा कम होता है। ऐसे ना एडवांस में क्या होता है, जो फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं ना जिसमें ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं, उसमें कई बार ऑप्शन आता है ना जिसमें हम चेक कर सकते हैं। बेसिकली अपन क्या कर सकते हैं, फिजिक्स में तुम चेक करना ना कभी, जिस भी क्वेश्चन में जितने ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स का मतलब आंसर आपका वेरिएबल की टर्म्स में दिया हुआ है, तो लुक फॉर द यूनिट ऑफ द आंसर। बेसिकली सपोज अगर आपको स्पीड निकालनी, स्पीड की यूनिट होती है यूनिट मीटर पर सेकेंड, सो लुक फॉर डायमेंशंस लाइक LT -1, राइट। तो जो भी आपको ऑप्शन दिया होगा उसमें ऑप्शंस में चेक करने की कोशिश करो। चारों ऑप्शंस को अगर आप नोटिस करोगे ना, तो एक दो ऑप्शन तो ऐसे होते हैं उसमें यूनिटी मैच नहीं करेगी, वो पॉसिबल ही नहीं होता है। ऐसा देखने को मिलता है एडवांस, ये कई बार दिख जाता है ना, इट्स कॉमन कि वो लेंथ की यूनिट से मैच ही नहीं करता है ऑप्शन। तो जितने ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं ऑप्शन में, यू हैव टू लुक फॉर यूनिट। स्पेशली फिजिक्स में इट वर्क्स, क्योंकि फिजिक्स में मोस्टली क्वेश्चंस बनाए जाते हैं कि वो ऑप्शंस में क्या है, एक लंबे लंबे एक्सप्रेशंस लिख देता है। अब वो एक्सप्रेशंस तक पहुंचने के लिए अपने को तो पूरी कैलकुलेशन करनी हो, हम ऑप्शंस देख के थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा आंसर डेफिनेटली नहीं होगा। जस्ट ट्राई दिस ना व्हाइल सॉल्विंग सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यू विल सी। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज पावर ऑफ ए पॉइंट। पावर ऑफ ए पॉइंट मैंने लास्ट क्लास में बताया था, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट वी कैन डिफाइन PA मल्टीप्लाइड बाय PP इक्वल टू PC मल्टीप्लाइड बाय PT इक्वल टू PD इक्वल टू PT स्क्वायर। तो इसको यहाँ पे सीकेंट थ्योरम भी बोलते हैं, दैट इज एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम दो सीकेंट बनाते हैं, so PA this distance, PB is full distance, PC and PD. If the point is inside the circle, we can define power of point PA multiplied by PB equal to PC multiplied by PD. तो अभी लास्ट क्लास में we defined this length PT. What was PT? This was length of tangent, and we have defined its formula also. What was length of tangent formula? That was under root of S1, right? What was S1? S1 was x1 square plus y1 square plus 2gx1 plus 2f(y1) plus c1 plus c. This was S1. तो अब नोटिस करो यहाँ पे, if the point is outside, PT square will be positive. This is positive. So we can define this value. Why it will be positive? Because this is nothing but you are putting the value of x1, y1 in the equation of circle. And we see कि अगर point outside होता है, if we put the point in the equation of circle, that will be nothing but positive. Point is outside the circle. Point outside the circle की ये condition होती है. This is the condition of point outside the circle. S1 is greater than C. For inside the circle, this part is not there because this is not defined. PT, there is no PT because this is less than 0, so we cannot define under root of S1. तो इस तरह से हम थोड़ा इसको वहां पे भी रिलेट कर सकते हैं. Power of a point is generally used if any question. See, दोनों डायग्राम में नोटिस करो. There is a chord, there is a chord, chord, chord. Chord की लेंथ से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन है, और उसमें अगर सपोज एक्सटर्नल पॉइंट है तो टेंजेंट की लेंथ से रिलेट किया गया है, कोई ट्रायंगल बनाया गया है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन है, then you have to use this.
is easier to solve the questions using this method. तो अब यहाँ पे इसका बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं. दिस इज इलस्ट्रेशन. फाइंड द कंडीशन दैट द पॉइंट्स, these points are concyclic. These 4 points are lying on circle. coordinate axis. तो अब अपने ये x एक्सिस और y एक्सिस पे ही पॉइंट्स है ना, a10 a20. तो ये इस तरह से कुछ पॉइंट्स हैं. एक पॉइंट है a10, ठीक है, और एक a20. मान लो लेफ्ट में, मान लो राइट में, मान लो, से कोई फर्क नहीं पड़ता ना. सपोज लेफ्ट में है या राइट में, जो भी है, 2 पॉइंट्स ऐसे हैं x एक्सिस पे, 2 पॉइंट्स आर ऑन y एक्सिस. एंड these points are on the circle because it is given they are concyclic. तो अगर ये सर्कल पे हैं तो मतलब इन चारों पॉइंट से एक सर्कल पास करता है. तो अब क्या होता है कि इसमें हमेशा, अगर तुम डायग्राम चाहो तो ऐसा बना सकते हो कि एक लेफ्ट एक राइट एक ऊपर नीचे ले लिया. तुम डायग्राम चाहो तो दूसरा भी बना सकते हो कि जो a1 है वो भी यहीं ले लो और a2 भी यहीं ले लो, और b1 भी पॉजिटिव में ले लो और b2 भी पॉजिटिव में ले लो. तो इसमें क्या होता है, जब कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर इफ यू हैव बीन गिवन पॉइंट्स, एक जो पॉइंट है आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ होता, इनडायरेक्टली आपको यूज करना होता है, दैट इज ओरिजिन. तो अगर ओरिजिन के लिए देखोगे तो ये और ये और ये और ये क्या है, कॉर्ड्स. यहाँ पे देखोगे तो ओरिजिन के लिए क्या है, दे आर सीकेंट्स. तो हम क्या करेंगे, ओरिजिन के लिए लगाएंगे पावर ऑफ पॉइंट. इसके लिए हम बोल सकते हैं पावर ऑफ पॉइंट. द पॉइंट इज ओरिजिन. इट हेल्प्स जब ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर पॉइंट दिए होते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होंगे वो लाइंस इंटरसेक्ट एक पॉइंट पे करेंगी, दैट इज ओरिजिन. तो अब यहाँ पे हम कंडीशन लगा सकते हैं दैट डिस्टेंस हियर a1 a2 ये हो गए यहाँ पे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में. तो ये वाला हम लगाएंगे यहाँ पे pa pp pc pd oa1 oa2 ob1 ob2. तो हम ये कंडीशन लगाएंगे. तो oa1 oa2 इज इक्वल टू ob1 ob2. तो यहाँ से कंडीशन आएगी oa1 इज डिस्टेंस, तो दैट विल बी mod a1 mod a2 इज इक्वल टू mod b1 mod b2. तो एक बेसिक सा क्वेश्चन है पावर ऑफ ए पॉइंट का, जिसमें ओरिजिन सर्कल के अंदर या सर्कल के बाहर, या जो सीक्वेंस और कॉर्ड्स होती हैं वो ओरिजिन से पास करती हैं. या फिर क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा लिखा हुआ है कि वो जो सीक्वेंस और कॉर्ड्स है अगर उसके बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो भी हम इस चीज को सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन में क्या है, पॉइंट पे एंगल 90 डिग्री. जैसे हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं. अच्छा क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राइंगल एपीसी इज राइट एंगल एट ए. तो इसमें राइट एंगल ए पे है, तो ये अपना ए है, ये बी है, ये अपना सी है. The circle with center A and radius AP cuts BC and AC internally at DME. तो सर्कल विथ डायमीटर AB, नहीं रेडियस लिखा ना, सेंटर या रेडियस AB. तो एक सर्कल बनाएंगे अगर अपन, तो वो इस तरह से बनेगा, that AB is the radius. तो कुछ इस तरह से सर्कल बनना चाहिए. Something like this circle will be there. ऐसा कुछ सर्कल होना चाहिए, तो इस तरह से यहाँ पे बनेगा. एंड नाउ दिस सर्कल इज इंटरसेक्टिंग AC एंड BC and AC. BC it is intersecting at D. So this is D. And AC it is intersecting E. So this is E. And we have been given BD is equal to 20. तो अपने को क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये जो लेंथ है, this is 20. DC is equal to 16. Then we have to find length AC. AC. तो अपने को ये लेंथ निकालनी है यहां से लेकर के यहां तक. अब देखो इसमें क्या है कि यहाँ पे एंगल 90 है. तो अभी तक अपन ने जो चीज का यूज नहीं किया है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है सर्कल का सेंटर ए है, हमने इसका यूज नहीं किया. तो ये अपना सेंटर है, इसको अपने को यूज करना है. आई कैन सी ये एक लेंथ है और ये पूरी लेंथ है, तो मैं यहाँ पे पावर ऑफ द पॉइंट ऐसे लिख सकता हूँ. पावर ऑफ पॉइंट किसके लिखेंगे, सी की, क्योंकि लेंथ का क्वेश्चन है, लेंथ इज गिवन, वी हैव टू अप्लाई पावर ऑफ द पॉइंट, क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट होता है. कॉर्ड में जो सेकंड कॉन्सेप्ट होता है दैट इज you draw perpendicular from center of circle to the chord. There are only two concept of length which we use to solve a question. तो पावर ऑफ पॉइंट C लिखने के लिए मैं लिखूंगा CD मल्टीप्लाइड बाय CD. अब उसके बाद में अगर C की अगर यहां पे लिखनी है, तो देखो ये पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे नहीं है, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसके सेंटर को यूज करना है. मतलब अपने को यहाँ पे सर्कल को मैं एक्सटेंड करूंगा तो नीचे भी सर्कल बनेगा, सेमी सर्कल वाला पार्ट. और यहाँ पे अगर मैं इसको एक्सटेंड करूंगा यहाँ से सेंटर ऑफ सर्कल से, तो ये जो है अब बनेगी सीकेंड. ई हो गया, तो अगर मैं इसको बोल देता हूं एफ, तो अगर सी के लिए लिखेंगे तो दैट विल बी सीई
मल्टीप्लाइड बाय CF, इस तरह से अपन लगा सकते हैं। अब CD तो अपने को पता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है दिस इज 60, CBV भी पता है अपने को, दैट इज 36। CE क्या होगा, CE तो अपने को नहीं पता, और अपने को इसका रेडियस जो है AB, तो अब अपने को AB अपन निकाल सकते हैं क्या, तो ये R, अगर इसको मान लेता हूँ R, ये भी R होगा, ठीक है, ये भी R होगा, और ये क्या हो जाएगा X, तो अपने को पता ही नहीं। तो CE मल्टीप्लाइड बाय CF क्या लिख सकते हैं अपन, वो मैं लिख सकता हूँ, दैट इज CE इज X, CF इज व्हाट, X प्लस 2R। एक ही इक्वेशन लिख सकता हूँ मैं यहाँ। अब अपन ने नोटिस को क्या यूज किया, वी हैव यूज्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, क्योंकि हमने इसको एक्सटेंड किया है, बट वी हैव नॉट यूज्ड द एंगल 90 डिग्री। 90 डिग्री हमने यूज नहीं किया है, तो 90 डिग्री तो अपने को पता है हमेशा कैसे यूज करना है। 90 डिग्री का यूज होता है दैट इज पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि लेंथ है, लेंथ पाइथागोरस थ्योरम ही ट्रायंगल में आती है, दैट इज r प्लस x का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर। अब आपको क्वेश्चन में जो भी निकालना है, आपको r प्लस x निकालना है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल r और x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है पावर ऑफ पॉइंट का कॉन्सेप्ट। तो पावर ऑफ पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, पावर ऑफ पॉइंट हमें दिखता नहीं है, पावर ऑफ पॉइंट के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं एग्जाम में। ध्यान रखेंगे, एक्सटर्नल पॉइंट से दो सीकेंट इफ दे आर ड्रॉन, और फ्रॉम इंटरनल पॉइंट टू कॉर्ड्स आर ड्रॉन। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे देखते हैं कॉर्ड विद मिड पॉइंट। तो अभी जब, हेलो, हाँ समीर बोलो। सर इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग वो नहीं लगा सकते, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स? सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स लगा सकते हैं मेरे ख्याल से। सिमिलैरिटी कैसे लगाओगे, क्योंकि अपने को पता नहीं है ना कि यहाँ पे ये लाइन आड़ी टेढ़ी हुई, तो इट इज नॉट राइट ट्रायंगल बनेगा CED से। नेक्स्ट स्लाइड, इसके पहले वाला स्लाइड, ये सही इसमें। अच्छा इसमें, ओके, हाँ इसमें क्या है, CED, ट्रायंगल CED क्यों और होगा 90? वो तो डायग्राम मैंने ऐसे बनाई, ये पॉइंट यहाँ बना लो, ऐसे बना लो। हाउ डू यू नो इट्स 90 डिग्री? देखो 90 डिग्री तो वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि 90 डिग्री होने के लिए ED will be the tangent to the circle. If ED will be tangent to the circle, it means line ED is touching to the circle at a single point. तो ये पॉसिबल नहीं है यहाँ पे ना, ये जो जो टेंजेंट होगी ना यहाँ पे, उसका एंगल यहाँ पे 90 डिग्री होगा, क्योंकि टेंजेंट का अगर सेंटर ऑफ सर्कल से ड्रॉ करते हैं, ये 90 डिग्री होता है, समझ गया। ठीक है, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो बेसिकली व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज कि कभी भी कॉर्ड का क्वेश्चन आता है ना, इफ देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ कॉर्ड स्पेसिफिकली, कभी भी कॉर्ड का क्वेश्चन आएगा, तो कॉर्ड में काफी कॉमन है लेंथ का क्वेश्चन बनाना ना। कॉर्ड में कॉमन कॉर्ड का क्वेश्चन भी आ सकता है, क्वेश्चन में लेंथ की बात करी है। इस तरह का क्वेश्चन मैंने असाइनमेंट में भी दिया था, जो पुराना आईआईटी का क्वेश्चन है। अब होता क्या कि ज्योमेट्री का जब क्वेश्चन आता है ना, तो वी ट्राइंग टू लुक फॉर इक्वेशंस ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। वी फॉरगॉट अबाउट दिस बेसिक कांसेप्ट, ऑलवेज रिमेंबर दिस। इफ इट इज द क्वेश्चन ऑफ लेंथ इन कॉर्ड, तो लेंथ ऐसे भी हो सकती है सीकेंट की भी, कॉर्ड की भी। तो इसमें बेसिकली वी यूज द कॉन्सेप्ट, फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल ड्रॉ द परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये जो है ये हमेशा आपको यूज करना है। दिस इज फर्स्ट कॉन्सेप्ट, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, ठीक है। टू यूज दिस वी हैव टू यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम ही जो है वो आपको लेंथ से रिलेटेड देगा। सेकंड कॉन्सेप्ट व्हिच वी हैव स्टडीड इज पावर ऑफ ए पॉइंट। तो ये दो कॉन्सेप्ट यू ऑलवेज हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ ए chord or secant in which you have been asked to find some length. So this is basically the thought process. Any question if it comes of chord, I always think about this. Agar question mein, if in the question it is written you have to find some length. Length can be length of chord, length can be any other length, length can be radius of the circle. These are all lengths. Okay, तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं chord with midpoint. Chord with midpoint का एक फॉर्मूला होता है, वो सबको पता होगा, T equal to S1 फॉर्मूला होता है. T is equation of tangent considering x1 y1 on the circle. तो हम x square की जगह x1 y1 ये पुट करते हैं. S1 is just putting the point x1 y1 in the equation of circle. तो इससे जब हम इक्वेट करेंगे, it gives you the equation of chord with midpoint. You can use this equation to solve the question, and you can find the equation of chord with midpoint. कैसे? Because to find the equation of this line, we know the point on the line. We can find the slope of the line, क्योंकि this is perpendicular to this line. So slope CP का जो होगा और slope
कॉर्ड का जो होगा उसका प्रोडक्ट -1 होगा। इस तरह से आप कॉर्ड का स्लोप निकाल के इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। If it is given in a question the chord is passing through a given point, but we have not been given that it is the midpoint. और अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है the chord is farthest from the center of circle, so that is only possible if that given point is the midpoint of the chord. तो जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊं, ये अपना एक सर्कल है, the chord is passing through a point, given point. तो अगर हम यहाँ पे एक chord बनाते हैं, तो सपोज मैंने एक chord बनाई यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, एक chord बनाता हूँ यहाँ पे इस तरह से, given point मैंने बना लिया ये, and I'm considering that point as the midpoint. Now make other chords from this point which is not the midpoint. So if this is not the midpoint, we will make another chord like this. This is not the midpoint. You can make another chord like this. You can make different chords. There are infinite chords passing through a given point inside a circle. You can make these different chords. अब इसमें ये वाली जो chord है, this is the chord जिसके लिए midpoint क्या है, this is the midpoint. अब वो बोलता है दिस कॉर्ड इज द फारदेस्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, ये अपना सेंटर ऑफ सर्कल। तो सेंटर ऑफ सर्कल से अगर मैं इस कॉर्ड का डिस्टेंस बोलूंगा, दिस विल बी द डिस्टेंस, दिस विल बी d1। फॉर कॉर्ड सेकंड इफ आई विल राइट द डिस्टेंस, दैट विल बी डिस्टेंस d2, दिस विल बी d2। फॉर थर्ड कॉर्ड इफ आई विल राइट द डिस्टेंस, आई विल राइट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस विल बी डिस्टेंस d3। so you can see d1 is always greater than d2 is always greater than d3। तो d1 will be the minimum distance, जो minimum क्या सॉरी farthest distance जहां पे chord होगी। so for it क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है chord at a farthest distance from the center passing through a point, that point has to be midpoint। अब देखो ये क्वेश्चन है लेंथ ऑफ chord का, क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है if the length of chord along the line is r, if it is a question of length you always have to use 90-degree triangle, Pythagoras theorem you always have to use, this is what we observe। तो अगर अपने को एक सर्कल दिया हुआ है, एक chord है along the line y equal to 2x plus 3, the length of chord is r, so this length is r। so what I will do is I always draw perpendicular from the center of circle, center is 0, 0, so I will draw from origin this perpendicular, length is r, so this is r by 2 and r by 2, ये तो मुझे करना ही है, and I will make this 90-degree triangle also। तो अब हमें यहाँ पे ये पाइथागोरस थ्योरम लगानी ही है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, we have to use this। so what we will use is OP square is equal to r square minus r by 2 का whole square, ये मुझे लिखना ही है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, I will always write this condition because it is a question of length, we have to find radius, radius is a length, so I will write this। अभी तक मैंने यूज नहीं किया है, I have not used this equation of line, so how we will use this equation of line? तो उसके लिए मुझे दिख रहा है this is a line and we have to find OP because we have found OP। if we can find the length of OP, we will equate that length to this, we can find radius। we can easily find OP because distance of a point from a line, so distance of a point from a line, origin का distance अगर यहाँ से लिखेंगे that distance will be this one। so now you will equate these two distances and you will find out। तो हम solve ऐसे क्यों करते हैं, why do we solve like this? because we know in chord if there is any question of length you always have to make this 90-degree triangle, always। तो ये अपने दिमाग में बिठा लो, ये हमेशा आपको करना है एग्जाम में, कैसा भी क्वेश्चन chord का लेंथ से रिलेटेड अगर आता है तो। अब हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, a variable chord is drawn through origin to the circle, find the locus of center of the circle on this chord as diameter। so अब हमें एक्सटर्नल पॉइंट हम मान लेते हैं, सपोज ये पॉइंट है, ओरिजिन से वी हैव ड्रॉन ए वेरिएबल chord, दिस इज ओरिजिन, वी हैव टू फाइंड द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल ड्रॉन इन ऑन दिस chord as diameter। तो ये अपनी chord होगी ना, यहां से लेकर के यहां तक। अगर इसको डायमीटर लेते हुए हम एक सर्कल बनाएंगे, वो सर्कल अपना कुछ ऐसा बनना चाहिए, this will be the circle, semi circle I will make। we have to find the locus of its center, so center will be what? center will be midpoint of chord, so this is M or this is P, so we have to find its locus, so the point will be H, K। अब अपन इसको कैसे कर सकते हैं यूज? what I can do is one of the method is this one, we know the center of this circle, what is the center of this circle? A, 0, ये हम कर सकते हैं, and it is easy to find the what we can draw perpendicular here। अब अगर अपने को निकालना इस पॉइंट का लोकस, we can apply slope of this multiplied by slope of this equal to -1। और ये हमने लास्ट क्लास में भी किया था, हमने क्या किया था, यहाँ पे इसको ज्वाइन किया था, and we knew the locus will be that circle whose end point of diameter will be a, 0 and 0, 0। तो ये जो लोकस है हमने लास्ट क्लास में सॉल्व किया था, ये जो लोकस आया था अपना, this is the locus, locus was this is a circle
एक मेथड हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, डायमीट्रिकल फॉर्म में डिस्कस किया था. दिस इज अ सर्कल whose end point of diameter are a comma 0 and whatever the external point 0 comma 0. ऐसा ही होगा. तो ये हम डायरेक्टली देख के यहाँ बता सकते हैं. बट देयर इज अ जनरल मेथड व्हिच यू शुड ऑलवेज नो. द जनरल मेथड इज बेसिकली, अगर कभी भी क्वेश्चन आता है chord with midpoint, because this question can be framed in parabola also, in ellipse also, in hyperbola also. Chord with midpoint passing through a given point. तो गिवन पॉइंट है, अपने को क्वेश्चन में दिया हो सकता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 0 comma 0. अब होता क्या है, इन द केस ऑफ सर्कल वी नो दिस प्रॉपर्टी. फ्रॉम हियर इफ यू ड्रॉ परपेंडिकुलर दैट विल पास थ्रू मिड पॉइंट ऑफ chord. For parabola, ellipse, hyperbola, there is no property like this. That is why we discuss always the second method. So second method becomes important. That is why we learn the equation of chord with midpoint, so that we can solve any question of ellipse and hyperbola or parabola also using this method. So second method, what it states is, what we can write is, we have to find the equation of chord with midpoint h comma k. So we will write equation of chord with midpoint in terms of h and k. Chord with midpoint की equation क्या होगी? That equation is t equal to s1. यही होगी. तो t is what? x square की जगह xx1, so it will become xh plus yk minus ax plus h. ये आएगा. s1 will be what? h square plus k square minus 2h. This is t equal to s1. And now we will apply the condition. It passes through given point. What is given point? 0 comma 0. So you just satisfy 0 comma 0 here. So we'll put x equal to 0, y equal to 0. What you will get? Minus ah is equal to h square plus k square minus 2h. इस तरह से यहाँ पे वो इक्वेशन आ जाएगी, h square plus k square plus minus ah equal to 0. ये इक्वेशन. तो ध्यान रखना. Now these questions I will not discuss in parabola, ellipse, hyperbola. I will just tell you that this is the also question. Same can be solved there. But method हम वहाँ discuss नहीं करेंगे because it is the same method you have to apply everywhere. For any other code, we apply this method. Okay. For any conic. This is the general method. That is why we study this equation of chord with midpoint. क्योंकि this equation is valid for any conic, whether it is parabola, whether it is ellipse, whether it is hyperbola. Similarly, chord of contact की जो equation है, that is also valid for any conic. तो इसलिए वो method वहां पे भी useful हो जाता है. Next यहाँ पे illustration देखते हैं. Locus of midpoint of chord of a circle which subtend right angle at a comma b lying inside the circle. It's a very good question. It can be asked in IIT also. It's a good question. देखो कैसे solve करना है. This question has been asked in KVPY previously also, na? Find the locus of midpoint of chord of circle which subtend right angle at a comma b inside the circle. So this is a midpoint of chord. Midpoint I will make m, that is h comma k. We have to find its locus. Okay. If there is a midpoint, there is a circle. What will I do is I always make perpendicular. ये तो अपने को हमेशा करना है, भले क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो, it doesn't matter. You always have to use this. Especially in case of circle, always make this diagram. I always make this diagram. Okay, whether it will be used in solving the question, it doesn't matter. Now this chord is subtending right angle है यहाँ पे ना, right angle at a point a comma b inside the circle. So there is a point a comma b inside the circle. So let me make a point a comma b inside the circle. अब हम एंगल ऑफ ए लाइन एट ए पॉइंट कैसे करते हैं डिफाइन? वी डिफाइन बाय जॉइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट टू दैट पॉइंट. दिस इज हाउ यू डिफाइन एंगल ऑफ ए लाइन सेगमेंट एट ए पॉइंट. यू join the end point of line segment to that point, and whatever angle that makes, that is the angle subtended by line segment at a point. तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री. This is the question we have been given, and we have to find the locus with midpoint. तो अब अपने को यहाँ लगे, what we can do is we can write the equation of chord with midpoint. See, in circles you don't have to apply that because I have told you there are other better methods also. दूसरी चीज मेरे को यहाँ पे दिख रही है, there is 90 degree. I have always told you 90 degree triangle, it means this will be end points of a circle whose these will be the end points of a diameter of a circle which will pass through point P. यहाँ पे ये जो सर्कल बनेगा ये उसके एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर. You can always say this. So if I will write these 2 points at A and B, तो हम ये बोल सकते हैं this is the circle
whose end points of diameter are A and B. We can always make this diagram. It means what? It means M is the center of that circle, right? Because M is the midpoint. अभी हमको इसको भी तो यूज करना है midpoint. M is center of that circle. That is what we can say, right? If M is the center of that circle, it means MP. If I will join this, MP will be equal to MA equal to MB. This is what we can say. MP is equal to MA equal to MB is equal to radius of that circle. Suppose the radius is capital small r. This is the radius of that circle, small circle. This is what we can say about this midpoint. अब मैंने तुम्हें हमेशा बताया एक डायग्राम तो अपने ये बन ही गया 90 डिग्री वाला, which we have already discussed. What else I can do? I will make this diagram also. That this 90 degree triangle in the. तो अब अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं? देखो, what I can do is we know this center. The center is minus G comma minus F. We know this point H comma K. So we can find this distance. If I will define this center as C, so we can find CM. Okay. We know CA. CA is radius of this circle, that is R. क्योंकि हमारे आंसर में जो आना है वो GF और C आ सकता है, because GFC is given. So we can bring this length also, because radius is G square plus F square minus C. ये लेंथ हम लिख सकते हैं. तो हम यहाँ पे AM की लेंथ लिख सकते हैं या BM की लेंथ लिख सकते हैं using Pythagoras. तो हम यहाँ पे इसी ट्रायंगल में क्या लगाएंगे? Pythagoras लगाएंगे. If you will apply Pythagoras, what you will see? You will see CA square is equal to CM square plus AM square. Now we know AM is nothing but radius of that circle, that is nothing but AM is small r, so I can write it as small r square. और यहाँ पे जो CA है वो कैपिटल R, उसको मैंने उसका रेडियस डिफाइन किया, तो यहाँ पे कैपिटल R पुट कर देंगे, तो ये कैपिटल R स्क्वायर है. CM स्क्वायर वी कैन डिफाइन, तो वी कैन सॉल्व दिस. Capital R square will be what? G square plus F square minus C. CM square will be what? H plus G square, K plus F square. And what will be AM square? AM square is small r square. Small r square is what? Distance between these 2 points. That will be H minus A square, K minus B square. अब अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे, it will turn out to be a circle only. तो अब वो जो सर्कल आएगा उसको आप डिफाइन कर सकते हैं. दिस विल बी द लोकस. एक अच्छा क्वेश्चन है जो इस पे बनाया जा सकता है, इस तरह का क्वेश्चन. इट्स अ गुड क्वेश्चन फॉर कॉर्ड विद मिड पॉइंट विद सबटेंड 90 डिग्री एंगल एट ए पॉइंट. तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. दिस इज लोकस ऑफ कॉर्ड विद मिड पॉइंट क्वेश्चन. अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं. टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट. हाँ रवि बोलो. तो इसमें ऐसा कर सकते थे हम लोग. कैसे, क्या कर सकते हैं? हम लोग को पी पता है, पी का कोऑर्डिनेट, और एच कॉमा के हम लोग उसको मान के एक सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं इसके टर्म में. आर उसका डिस्टेंस हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा. आर उसका तो मतलब पी के कोऑर्डिनेट से और एम के एच कॉमा के कोऑर्डिनेट से हम लोग सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं. कौन सा सर्कल है? ग्रीन वाले का? हाँ हाँ लिख सकते हो. फिर सो वो सर्कल पी कॉमा ए कॉमा बी से पास हो रहा है. सर्कल कहाँ से पास होगा फिर? वो ए कॉमा बी. वो तो आप फिर रेडियस कैसे लिखोगे? रेडियस तो वो है ना, एम और पी के बीच का डिस्टेंस. एम और पी के बीच का डिस्टेंस. पी, एम और पी के. बट पी तो ऑलरेडी आपने पॉइंट ए कॉमा बी लिया है ना. इफ यू हैव टेकन ए कॉमा बी पॉइंट ऑलरेडी, यू हैव यूज्ड दैट पॉइंट. ओके, तुमने यूज कर लिया क्योंकि तुमने रेडियस डिफाइन करने के लिए उसको यूज किया है. और अगर तुम उससे इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखोगे फिर वापस ए कॉमा बी पुट करोगे तो उससे फायदा नहीं होगा. समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं? हाँ यस. देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, एक कंडीशन जो अपन यूज कर लेते हैं कहीं पे और वापस अगर तुम उसको यूज करोगे ना क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो उससे आंसर नहीं आएगा. क्योंकि वो हमेशा ध्यान रखो, जो पॉइंट यूज कर लिया मतलब उसको वापस यूज करने से कुछ नहीं होगा. अगर तुमने ये रेडियस डिफाइन कर ली एमपी से, तो ये पॉइंट यूज हो गया है, इसका कोई यूज नहीं है, उसको हटा दो. उसके अलावा कुछ और है तो तुम कर सकते हो. अब ये जरूरी नहीं है क्वेश्चन लोकस का है. ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है फॉर एनी क्वेश्चन. लाइक ये एम पॉइंट दे देगा, ये कोई तीसरा पॉइंट दे देगा और आपसे कोई लेंथ निकलवा ले या इस सर्कल की रेडियस निकलवा ले रेड वाले की. ऐसे भी पूछा जा सकता है ना क्वेश्चन.
Yes, सो इट्स, ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट तरीके से इस क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सकता है। एक और क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू दिस सर्कल फ्रॉम एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन द लाइन। तो ये देखो मैंने डायग्राम पहले बनाया था, अब इसमें मैंने बताया था दिस लाइन इज टचिंग अनदर सर्कल, दिस लाइन पासेस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट, टचिंग अनदर सर्कल का मैंने लोकस बताया था। नाउ वी हैव टू फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसके मिड पॉइंट का अपने को लोकस बताना है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का ना, तो इसका जो मिड पॉइंट है इसको अगर मैं लिख लेता हूँ एच कॉमा के, और यहाँ पे इससे अपन ने ड्रॉ किया है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन अपन लिख सकते हैं फॉर एनी पॉइंट P x1 y1 ऑन द लाइन। तो x1 y1 के हिसाब से अगर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, C ऑफ C, इक्वेशन लिखेंगे तो आएगी x(x1) प्लस y(y1) इक्वल टू 1। ये होती है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, t इक्वल टू 0। ओके, अब क्योंकि मिड पॉइंट का लोकस निकालना है तो आप कॉर्ड विद मिड पॉइंट भी लिख सकते हैं। ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, आई कैन राइट कॉर्ड विद मिड पॉइंट आल्सो, बोथ विल रिप्रेजेंट द सेम इक्वेशन। व्हाट इज कॉर्ड विद मिड पॉइंट? कॉर्ड विद मिड पॉइंट विल बी t इक्वल टू s1, तो आएगा xh प्लस yk माइनस 1 इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 1। नहीं, t इक्वल टू s1 ना, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 1। अब ये काफी कॉमन तरीका है ना, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको दिख रहा है ना सेम कॉर्ड इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एंड सेम इज कॉर्ड विद मिड पॉइंट, तो आप इन दोनों को कंपेयर करके सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा, क्यों कंपेयर कर सकता हूं? बिकॉज बोथ आर सेम इक्वेशंस, बिकॉज बोथ रिप्रेजेंट्स द सेम कॉर्ड। इट्स अ वेरी कॉमन मेथड जिसको यूज किया जाता है। तो अपन ने इसका क्वेश्चन देखा था, हाउ डिड वी सी दिस क्वेश्चन, वी हैव बीन गिवन द इक्वेशन ऑफ AB, वी हैड टू फाइंड पॉइंट P। तो अपन ने क्या किया था, पॉइंट P के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन लिखी थी, और जो गिवन इक्वेशन AB की थी उससे कंपेयर करके अपन ने पॉइंट P निकाला था। यहाँ पे भी कुछ वैसा ही है, सेम कॉन्सेप्ट वी आर अप्लाइंग हियर। वी आर रिटन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर P, वी कैन आल्सो राइट फॉर M पॉइंट M मिड पॉइंट, फिर उसको अपन कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करेंगे तो अपना यहाँ पे है, अभी तक नोटिस करो हमने यूज क्या नहीं किया, वी हैवंट यूज्ड दिस लाइन दैट दिस पॉइंट विल सैटिस्फाई दिस लाइन, सो वी हैवंट यूज्ड 2x1 plus y1 minus 4। These two equations we have written for any point x1, y1. So this will be our third equation. So now the question is, there are three equations, equation number 1, equation number 2, equation number 3. Using this you have to solve for h comma k and you have to eliminate x1, y1. तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो आई कैन कंपेयर these two equations। तो इसमें अपने को दिखेगा ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आएगा x1 by h इक्वल टू y1 by k is equal to h square plus k square। अब ये जो वैल्यू आ जाएगी x1 की, दैट इज इक्वल टू h अपॉन h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, y1 की वैल्यू आ जाएगी, क्या कर रहा हूँ, h मल्टीप्लाइड बाय h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। सर h मल्टीप्लाई, हाँ, h मल्टीप्लाइड बाय h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, y1 will be k multiplied by h square plus k square, and you just have to put these two values, put in 3. If you will put in 3, you will get the locus. ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन आया भी है मेरे हिसाब से JEE एडवांस में एक बार, कि आपको कॉर्ड विद मिड पॉइंट का लोकस निकालना है ड्रॉन फ्रॉम एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट व्हिच लाइज ऑन ए स्ट्रेट लाइन। तो इस तरह से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। अब सेम क्वेश्चन ध्यान रखना, ये सर्कल में भी आ सकता है, ये सेम क्वेश्चन इलिप्स हाइपरबोला उनमें भी आ सकता है। ओके, ये चीज का ध्यान रखना, इट कैन बी मेड देयर आल्सो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है, देखो, अच्छा ओके मैंने यहाँ लिख दिया ऑलरेडी। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज टू सर्कल्स। तो अभी तक अपन ने जो डिस्कशन किया दैट इज फॉर वन सर्कल। अब एक से ज्यादा सर्कल्स के क्वेश्चन काफी कॉमन है एडवांस में जो आते हैं, सिंगल सर्कल के क्वेश्चंस भी आते हैं, एक से ज्यादा सर्कल्स के भी क्वेश्चन आते हैं। एक से ज्यादा सर्कल्स के जो क्वेश्चन है, मोर देन वन सर्कल, इट इज मोस्टली क्वेश्चन ऑफ 2 सर्कल्स, 3 सर्कल्स, लाइक दिस द क्वेश्चन कैन बी framed. 2 circles, basic conditions you should know that circles are not touching and not intersecting. These conditions you have already studied. Distance between the center of circle is greater than sum of their radius. Distance between center of circle equal to radius. Distance between center of circle is less than radius. And distance between center of circle equal to difference of radius या फिर less than difference of radius. These are the 5 possible cases. अब इन 5 possible cases में जो first 2 cases हैं, उसमें से जो second case है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे काफी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। When 2 circles are touching each other, then what are the conditions? उसके अलावा मैंने यहाँ पे लिखा है एक ही, C1t upon C2t, C1t upon C2t. This is very important. This ratio we use to find what?
इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन एक बार आईआईटी में आया है टू सर्कल्स। इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट क्वेश्चन कैन बी फ्रेम फॉर टू सर्कल्स। इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट हम बाद में भी देखेंगे फॉर टू डिफरेंट कोनिक्स, सर्कल एंड पैराबोला, पैराबोला एंड इलिप्स, इलिप्स एंड हाइपरबोला, लाइक दैट। बट व्हाट इज दिस रेशियो, वी विल डिस्कस दिस। यहाँ पे तो अपन को दिख रहा है C1T और C2T, व्हाट इज द रेशियो, R1 is to R2, we can see here also C1T and C2T ratio is R1 is to R2. How do we show that? We'll make a perpendicular from center C2. हम यहाँ से एक perpendicular बना लेंगे। We'll also make a perpendicular from here to this. इसको यहाँ की जगह नीचे बना दो, थोड़ा easy रहेगा। And now you can see these angles are equal, vertically opposite angles. तो ये जो triangle है, if this point is A, this point is B, so we can say C1 BT triangle. This triangle is similar to triangle C2AT. Based upon the similarity, we can write this ratio C1T upon R1 or C1T upon C2T is equal to R1 upon R2. This is the ratio we can write. तो इसको अपन यूज कैसे करते हैं, to find point T. Which point? To find point T. Why point T is important? Point T is important because it lies on the common tangent of two circles. इन दोनों के कॉमन टेंजेंट के ऊपर ये पॉइंट लाई करता है। बट व्हाट अबाउट ये जो अपन बाहर की तरफ टेंजेंट बना रहे हैं, तो बेसिकली दो तरह की टेंजेंट डिफाइन करी जाती है, वन इज इंटरनल कॉमन टेंजेंट, वन इज एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट। एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट को भी अगर आप एक्सटेंड करेंगे, इफ यू एक्सटेंड दिस एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट, दे विल मीट एट ए पॉइंट T डैश। फॉर दैट आल्सो यू कैन से दैट T डैश का अगर आप रेशियो निकालोगे, अभी मैं आगे डायग्राम बताऊंगा इन नेक्स्ट पेज, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, दैट रेशियो विल आल्सो कम आउट टू बी C1 R1 upon R2। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो पॉइंट है दिस इज इंटरनली डिवीजन पॉइंट। Point T divides line joining the center of circle in the ratio of radius of their circles internally. तो अगर आपको दोनों सर्कल पता है, if you know the both circles and their center coordinates and their radius, you can find the intersection point of common tangent of two circles. Okay. So अब उसके बाद में अगर अपने को common tangent की इक्वेशन लिखनी है तो कैसे लिखेंगे? So the common tangent can be written as y equal to mx plus c, or we can write the common tangent at the point T if we know. Suppose if this point comes out to be x1 comma y1, we know this point, we can find this point because we know the equation of both the circles. So we can write it as y minus y1 upon x minus x1 is equal to m. We know x1 y1, we just only have to find m. So what is the condition we will apply? Because this is a tangent to any circle, just apply the condition that this line is tangent to any one of the circles, that is distance from center equal to radius. If you will apply that condition, you will find m easily. And if you know the value of m, you know the equation of common tangent, internal common tangent. Like this we can find. This is the case, और ये यहाँ पे मैं explain करूंगा. These are the conditions. Inequality based questions, if it is framed like two circles are intersecting each other, number of common tangents, these kind of questions usually come in JEE main. Like how many common tangents can you draw to two circles? If two circles are away from each other, there are four common tangents. If they are touching each other externally, there are three common tangents. If they are intersecting each other, there are two common tangents. If they are touching each other internally, there is one common tangent. If one circle is inside another, there is no common tangent. Usually inequality based questions come from this diagram here. Inequality जो है इस पे आता है क्वेश्चन. If a question comes based upon inequality, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होती है, because this represent they are intersecting, so that means C1 C2 is less than R1 plus R2, but they are not inside each other. So if they are not inside each other and not touching, then this must be greater than mod of R1 minus R2. इस पे ज्यादातर क्वेश्चन इनइक्वालिटी बेस्ड बनाए जाते हैं ऑन दिस कंडीशन. तो ये हो गया इसका बेसिक, इस तरह के क्वेश्चंस आपने किए होंगे. अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो अब इंपॉर्टेंट चीज है, पहले मैं डिस्कस करता हूं सर्कल टचिंग ईच अदर. दिस इज इंपॉर्टेंट, इस पे ज्यादातर क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इसको भी हम देखते हैं वापस. तो जैसे क्वेश्चन लिखा, इफ ए सर्कल सी पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,0 टचेस अनदर सर्कल एक्सटर्नली एट द पॉइंट 1,-1. तो ये मैंने डायग्राम बना लिया. देन द रेडियस ऑफ सर्कल सी, इसका अपने को रेडियस बताना है क्या होगा, सर्कल सी का रेडियस क्या होगा. ऑलवेज रिमेंबर कि जो एक सर्कल अपने को दिया हुआ है, वी कैन मार्क इट सेंटर एंड रेडियस. व्हाई विल आई मार्क इट सेंटर एंड रेडियस? तो हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी दो सर्कल के टच करने की बात करता है क्वेश्चन में, ऑलवेज व्हेन टू सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर, you always have to make the diagram line joining the center of their circles. You always have to join their line joining the center of these two circles.
and we always apply the condition that this distance is equal to r1 plus r2. ये हमेशा कंडीशन लगानी है. Mostly the question is framed in for external touching only. So we always apply this condition that C1 C2 is equal to R1 plus R2. This is the condition we have to apply always. ये हमेशा आपको लिखना है C1 C2 is equal to R1 plus R2. So to define C1 C2, I have to define R1 and R2. तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसका सेंटर और रेडियस निकाला. Now we have found its center and radius. I will join and extend this to its center and radius. तो हमेशा अपने को ये कंडीशन लगानी होती है C1 C2 is equal to R1 plus R2. So I always draw this diagram first. अब इसके बाद में अपन कैसे करेंगे सॉल्व. अब अपने को what we have to find is R. What are the condition we can apply? This point is on the circle C, so we can define condition that this is also radius R. This point पे हम condition क्या लगाएंगे? This division ratio is R is to 5. Point A. R1 is to R2 में divide करता है ratio, तो ये point A है जहाँ पे टच करेगा. तो internal division by point A लगाएंगे तो आएगा -2R plus 5H upon R plus 5 is equal to x coordinate 1. 3R plus 5K upon R plus 5 equal to -1. तो ये दो कंडीशन आ जाएंगी. इससे हम h और k की वैल्यू निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ r. Why did I find this? अब मान लो ये आपने नहीं निकाला, तो सेकंड कंडीशन वी विल अप्लाई कि यहां से डिस्टेंस ऑफ h, k फ्रॉम 4, 0 इज इक्वल टू नथिंग बट रेडियस. ये कंडीशन अपने को यहां तो लगानी है, नहीं तो इस पॉइंट का अपन यूज कैसे करेंगे. तो ये कंडीशन लगाएंगे. नाउ दीज आर थ्री इक्वेशंस, 1 2 3. व्हाट वी हैव टू फाइंड? रेडियस. सो वी विल एलिमिनेट h and k इन टर्म्स ऑफ रेडियस एंड वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन. यू विल गेट r इक्वल टू 5. तो ऐसे सॉल्व करना है. तो ये ध्यान रखेंगे, एक ये कंडीशन हमेशा लगानी होती है C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2. इस तरह की कंडीशन लगानी पड़ सकती है, बट ये कंडीशन काम आती है जब क्वेश्चन में क्या होता है, लेंथ का क्वेश्चन होता है, क्योंकि इसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला से लेंथ को इक्वेट करेंगे. बट उसके अलावा इफ यू नो द पॉइंट, कॉमन पॉइंट, तो व्हाट रेशियो इट डिवाइड्स, तो आपको रेशियो पता होना चाहिए. बेसिकली इंटरनल डिवीजन का रेशियो, वो आप उस रेशियो में अप्लाई करते हैं. ये आपको सेकंड कंडीशन लगानी होती है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर. These two conditions you have to apply if you know the point of contact, और जहां पे common tangents meet कर सकती हैं उसका point का coordinate पता है, then you apply the ratio condition always. तो ये दो कंडीशन हमेशा अप्लाई करनी होती है. इसी तरह से हम क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व फॉर 2 सर्कल्स टचिंग. अब हम देखते हैं इसमें एक अच्छा क्वेश्चन. उससे पहले हम देखते हैं एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट की लेंथ और इंटरनल कॉमन टेंजेंट की लेंथ. इसको हम कैसे करते हैं डिफाइन. सो दिस इज द डायग्राम फॉर एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट. देयर कैन बी 2 इंटरनल कॉमन टेंजेंट आल्सो. So we have defined its length. These two circles are touching, not touching. These two circles are away from each other. There is an external common tangent. We have to define its length. तो मैंने क्या किया, इसको एक्सटेंड किया है. It is meeting at point A. तो मैंने तुम्हें वहां बताया था, इसको मैंने पॉइंट T बोला था वहां पे. अब अगर इस डायग्राम में देखोगे तो see this angle will be nothing but theta. So what I can write is R1 upon C1A is equal to sin theta perpendicular upon hypotenuse. Similarly, R2 upon C2A will be sin theta. So we can write C1A upon C2A. ये रेशियो क्या है? R1 is to R2. तो यही रेशियो हमने पहले लिखा था C1T upon C2T. उसमें R1 is to R2 था. The same ratio we wrote for internal. But here point A is what? This point divides line joining center of circle externally in ratio of their radius. This is important. It is used when we have to find point A. We have been given C1 R1, C2 R2. We can use this to find intersection point of common tangents, intersection point of external common tangents. तो हम इसको यूज करते हैं to find point A. Or if it is given, we know point A. और if we have been given the coordinate of point A and we have to find the center of circle, तो हम इसके लिए इसको यूज कर सकते हैं. And based on this we can find the equation of common tangent, because if we know the point A we can write the equation passing through a single point. Condition apply करेंगे distance from center equal to radius, तो वहां से उसकी इक्वेशन आ जाएगी. अब लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट को कैसे डिफाइन किया गया देखो. तो लेंथ ऑफ एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट की जब यहाँ बात करते हैं, व्हाट इज दिस? एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट को डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट भी बोला जाता है, एक ही मतलब होता है. तो लेंथ होती है जहां से वो टच करती है. दिस इज द लेंथ ऑफ एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट. ये टेंजेंट जो इसको टच कर रही है दोनों सर्कल्स को, इन पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट. अब यहाँ पे हमें ये लेंथ डिफाइन करनी है. इसका मेथड होता है, ये मेथड मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इफ एनी क्वेश्चन इज फ्रेम्ड
if you have to use this formula, you can use this formula, but क्वेश्चन कैसा भी फ्रेम किया जा सकता है जिसमें हो सकता है वो लेंथ नहीं निकालना हो, बट ज्योमेट्रिकली कैसे उसको यूज करते हैं. इफ फॉर टू सर्कल्स ए कॉमन टेंजेंट इज ड्रॉन, व्हाट इज द डायग्राम, कैसे हमने लेंथ निकाली उसका डायग्राम समझना इसकी जरूरी, बिकॉज बेस्ड अपॉन दिस डायग्राम यू कैन मेक एनी क्वेश्चन in which there is a line which is touching two circles is drawn. You always make that diagram. The diagram is basically, अगर दो सर्कल्स अपने को दिया हुआ, जैसे अपने को ये दिया हुआ, देखो ग्रीन दिया हुआ है और एक अपने को दिया हुआ रेड. I am making the diagram again so that you will be able to understand it better. So what we will do is we have to find this length of common tangent. So this is the length we have to find. Okay, or we don't have to find its length, or there is some question in which this diagram is made that this is touching line to both the circles. What diagram do we make geometrically? We will first join the center of circles. So this is the center. This is the center. We will join the center of these two circles. Next step, what we do is, because these two are tangents, we draw the perpendicular from the center of each circle to the tangent. I have already told you, if there is a line is a tangent to the circle, you always draw perpendicular from the center of circle to that tangent. Next step is what? जो भी लाइन दोनों को टच कर रही है, we will draw a line parallel to this common tangent line always from center of either of the circles. I can draw from here a line parallel to the common tangent. This is what I have drawn here. You always have to make this line to apply the Pythagoras theorem to solve the question of length. Any question? This question is easier because we can directly learn the formula and apply in the exam. हम याद करके apply कर सकते हैं. But if any question it comes, कोई सा भी diagram अजीब सा है, उसमें common tangent दिख रही है, so there is a concept. This is the concept. This is the derivation of this, that you have to make a line parallel to the other line, parallel to the common tangent. तो हम यहाँ से ये line इसके parallel draw करेंगे and we make this 90-degree triangle, जिसमें हम Pythagoras theorem apply करते हैं. So what happens is, ये जो बन जाता है यहाँ पे, ये जो figure है, ये वाला, this is nothing but a rectangle because we have drawn this parallel to this line. So this is a rectangle because here it is 90, here it is 90, this is parallel, so this will become a rectangle. Now if this is a rectangle, we know the length. ये length कितनी हो जाएगी, ये total length कितनी है, this is R2, this is R1, so this will become R2 minus R1. Now we can apply Pythagoras theorem. Pythagoras theorem will be d square minus R2 minus R1 का whole square is equal to length of this common tangent का square. So that will become d square minus R2 minus R1 का square का root. This will be the length of external common tangent. अब आप बोलेंगे सर आपने इस center of circle से क्यों draw करी line parallel to common tangent? How do we know we have to draw from this center of circle line parallel to common tangent? You can draw from other center also. It doesn't matter. You have to draw. You can draw from other center also. For that you will have to extend this here to make the triangle. So here also you can make the triangle. Here if you will make the triangle, you can define this length, that will be R2 minus R1. This will be the length and this will be the length of common tangent and this is between the distance between center of circle. तो उस तरह से अपने को ये डायग्राम बनाना होता है. सिमिलर तरह से we define length of internal common tangent. तो internal common tangent में जो पॉइंट होता है इसमें भी रेशियो क्या है, C1a upon C2a. Always remember, if this point is given, you have to use the internal division ratio, that is R1 is to R2. अब इस डायग्राम में क्या बनाया देखो, एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है. वी हैव टू फाइंड इट दिस लेंथ बोले तो यहां से लेकर के यहां तक. दिस इज द लेंथ ऑफ इंटरनल कॉमन टेंजेंट. सो व्हाट, हाउ वी विल मेक द डायग्राम, वी विल मेक द परपेंडिकुलर ऑन दिस फ्रॉम बोथ द सर्कल सेंटर. एक तो अपन ये बनाएंगे. नेक्स्ट लाइन वी विल मेक लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल. देन वी विल ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू that is common tangent from one of the centers. So I will make a line parallel to this from this. And यहाँ पे अपन 90 बनाए, इसको एक्सटेंड करेंगे. So this triangle will become C1 C2T. तो यहाँ पे अपन ने क्या लगाया, this is Pythagoras theorem in C1 C2T. हमने इसमें Pythagoras theorem अप्लाई करके ये वाली लेंथ निकाली. You can remember this formula. D is the distance between center of circle. R1 R2 is the radius of the circle. And length of internal common tangent is this. The point at which the tangent intersect. Internal common tangent के लिए it will divide internally in the ratio R1 is to R2. For external common tangent it will divide externally in the ratio R1 is to R2. तो अब यहाँ पे we can see length of external common tangent जो है वो बड़ी होती है length of internal common tangent से, क्योंकि length of external common tangent क्या है, that is
तो लेंथ ऑफ एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट अपने को पता है दैट इज डी स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 या r2 माइनस r1 का होल स्क्वायर। तो ऑब्वियसली ये लेंथ इससे बड़ी होगी, क्यों? बिकॉज वी आर सब्ट्रैक्टिंग ए स्मॉलर वैल्यू, हियर वी आर सब्ट्रैक्टिंग ए लार्जर वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू क्या होगी? डेफिनेटली बड़ी होगी। अब देखो इस पे एक अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है, और ये क्वेश्चन जो है आईआईटी के पेपर में आ सकता है इस तरह से। इसको हम बोलते हैं किसिंग सर्कल्स थ्योरम करके होता है, काफी कॉमन सा क्वेश्चन है। 3 सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं इस तरह से, इसको किसिंग सर्कल्स थ्योरम भी बोलते हैं। इस पे एक क्वेश्चन कैन बी मेड एज एन इंटीजर टाइप क्वेश्चन, so the result that will come, you can remember the result also to solve the question. It says there are 3 circles of radius a, b and c touch each other externally. This question was asked in JEE main exam. Okay, तो ये वाला क्वेश्चन जो है एज एन इंटीजर टाइप क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है JEE एडवांस में। 3 circles are touching each other externally if they have x axis as a common tangent. तो यहाँ पे मैंने 3 सर्कल बना रहा हूँ, who are touching each other externally, they are touching x axis as the common tangent. तो अभी अपन ने देखा कि यहाँ पे लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट कैसे करते हैं डिफाइन। सी इन दिस क्वेश्चन देयर इज नो कोऑर्डिनेट गिवन ऑफ एनी पॉइंट, so we will not use the internal division and external division concept because that is used when point coordinate is given. So we will use the concept line joining the center of circle is equal to sum of their radius. तो जैसे मैंने ये 3 डायग्राम 3 सर्कल बनाए all touching the same line, I will join their center of circles. So this is radius A if I have defined, this is radius B, this is radius C. So what I will do, I will solve length of common tangent because another concept is that only, because this is common tangent length. I will define like this, that this common tangent length between these two circle common tangent length, if you do sum, you will get common tangent length of these two circle, that is of this external common tangent. You can find this length. तो हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे बिकॉज वी नो क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट दीजिए हुए, तो कोऑर्डिनेट का तो यूज करेंगे, इंटरनल डिवीजन वी विल यूज द कांसेप्ट ऑफ लेंथ। लेंथ का कांसेप्ट हम ऐसे यूज करेंगे यहाँ पे, इसके सेंटर ऑफ सर्कल को ज्वाइन करेंगे, एक लाइन ये बनाएंगे, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल ये हम तो ज्वाइन करना ही है, और यहाँ पे इस ट्रायंगल को यूज करेंगे टू डिफाइन दिस लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट। दैट विल बी, वी कैन डिफाइन डायरेक्टली आल्सो। कैसे कर सकते हैं? या तो इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, बट वी हैव आल्सो स्टडीड द फार्मूला। लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्कल्स क्या होता है? एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट इज d स्क्वायर माइनस difference of their radii का whole square. d is distance between center of circle. Distance between center of circle is sum of their radius, so it will become b plus a का whole square minus difference of their radius, that is b minus a का whole square. यही वैल्यू आएगी। देखो इसको आप ऐसे डायग्राम से समझ सकते हैं, वही मैंने यहाँ पे किया, नहीं तो आप डायरेक्टली कंडीशन लगा सकते हैं। डायग्राम से मैंने क्या किया, this is your common tangent, I have drawn a line parallel to this common tangent and make this triangle, the same triangle I made earlier also. Similarly we can define this length AC. तो इसके लिए अपन यहाँ पे इसके सेंटर को ज्वाइन करेंगे, तो AC is the length of common tangent between these two circles, that will be d square, that is a plus c का स्क्वायर माइनस डिफरेंस ऑफ रेडियाई का स्क्वायर, that is a minus c का स्क्वायर। तो इसमें अगर आप लगाओगे तो उससे वही आएगा, that is 2 root AC। फिर तीसरा ट्रायंगल बनाएंगे हम यहाँ पे इसको ज्वाइन करके, तो यहाँ पे अपना ये 90 डिग्री का ट्रायंगल बनेगा, इससे लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट इसके बीच की आ जाएगी, that length will come out to be 2 root CD। तो we'll apply the condition this total length is equal to sum of these two small lengths, तो उससे आपकी वैल्यू आएगी 1 by root a is equal to 1 by root c plus 1 by root। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इसमें नोटिस करेंगे सबसे छोटी लेंथ क्या है? a है, सबसे बड़ी लेंथ क्या है? c है, और b उसके बीच में, तो 1 by root a is equal to 1 by root b plus 1 by root c। This is the condition if 3 circles they touch each other externally on a given line. It could be any line, remember it can be x-axis or it is any line, because we have used the concept of not x-axis, we have used the concept of length. Length always remains same। कि अगर 3 सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं एक दूसरे को, ये इसको भी कर रहा है, ये इसको भी कर रहा है, ये इसको भी कर रहा है, and they all are touching a single line, you can apply this 1 by root a is equal to 1 by root b plus 1 by root c। तो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, we can write c value as 25, we can write this as 16, you have to find the value of a। तो इस तरह से एक इंटीजर टाइप का क्वेश्चन कुछ सिमिलर टाइप का बनाया जा सकता है। इट्स एन इंपॉर्टेंट थ्योरम इन कॉमन टेंजेंट ऑफ 2 or more circles। So this is the question of common tangent। next यहाँ पे क्या है? common chord। तो इसमें डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं? फार्मूला जो एग्जाम में आएगा ये नहीं, जो लेंथ ऑफ टेंजेंट का फार्मूला। हाँ लगा सकते हैं, वही लगाया मैंने यहाँ पे। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल, दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडियाई माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, वही लगाया मैंने यहाँ पे ना। दिस इज द फार्मूला आई अप्लाइड। तो बेसिकली हमने क्या किया, ये लेंथ प्लस ये लेंथ का सम, ये टोटल लेंथ के बराबर। दिस इज व्हाट यू हैव डन। तो ये काफी काम आता है कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, नॉट इन दिस वन, कोई सा भी अगर आपको जो सर्कल टच कर रहे हैं, इट इज समथिंग रिलेटेड टू लेंथ, अगर एक्सटर्नली टच करते हैं तो बहुत इजी हो जाता है लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट लिखना। डायरेक्टली फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको बताया वो काम आ जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर कई बार वो क्वेश्चन में वो नहीं दिख रहा है तो मैंने तुम्हें डायग्राम बताया कैसे बनाना है, बट वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है
उस पे इस तरह से डिफिकल्ट दिखने वाले क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉमन टेंजेंट कॉमन कॉर्ड। तो कॉमन टेंजेंट और कॉमन कॉर्ड में इन वाले कॉमन टेंजेंट और कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन अपन लिखते हैं S1 = S2, ये सबको पता होगी। जहां पे S1 एक सर्कल की इक्वेशन, S2 दूसरे सर्कल की इक्वेशन है, उसको इक्वेट करेंगे। इक्वेट करते वक्त बस ये ध्यान रखना है, कोफिशिएंट ऑफ x² = कोफिशिएंट ऑफ y² होना चाहिए, बिकॉज दैट विल रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ लाइन। In these cases we can define common tangent when two circles are touching each other. इस लाइन की इक्वेशन S1 = S2 है, इस लाइन की इक्वेशन S1 = S2 नहीं है, ध्यान रखेंगे। This is S1 = S2, this is S1 = S2, this is S1 = S2, common chord. These equations are S1 = S2, this is not S1 = S2। इसकी इक्वेशन निकालनी है तो आपको इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। पहले वो इंटरसेक्शन पॉइंट जो आएगा वो निकालना पड़ेगा रेशियो से, फिर उसके बाद में आप इसकी इक्वेशन करेंगे डिफाइन। इस तरह से यहाँ पे ये 3 केस में हम इक्वेशन डिफाइन कर सकते हैं। अब जो S1 = S2 होती है वो एक डिफाइन किया जाता है, दैट इज एन इक्वेशन ऑफ एन एक्सिस, जिसको अपन बोलते हैं रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस आई डोंट थिंक एज ए वर्ड एग्जाम में यूज किया जाएगा क्वेश्चंस में, बट इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो इन डायग्राम्स में अपने को दिख जाती है, वो अपन बता देते हैं। तो यहाँ पे ये जो S1 = S2 है, ये इन दोनों सर्कल की रेडिकल एक्सिस बोलते हैं। रेडिकल एक्सिस बेसिकली कैसी लाइन होती है जिस पे अगर आप एक पॉइंट लेते हैं, इफ आई कंसीडर ए पॉइंट ऑन दिस एनी पॉइंट एंड इफ यू विल ड्रॉ टेंजेंट्स, तो सी, तो यहाँ पे ये वाली जो लेंथ है और ये वाली लेंथ जो है इक्वल होगी। क्यों होगी इक्वल? बिकॉज दिस इज लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, दिस लेंथ विल आल्सो बी इक्वल टू दिस लेंथ, बिकॉज दिस इज आल्सो लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो रेडिकल एक्सिस बेसिकली एक ऐसी लाइन होती है जिसकी इक्वेशन अपन ऐसे डिफाइन करते हैं। इट वोंट बी आस्क्ड इन क्वेश्चन, आई डोंट थिंक सो, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। बेसिकली अगर इस तरह से एक डायग्राम बन जाता है और इस तरह के डायग्राम पे जे एडवांस में क्वेश्चन आया, तो उस डायग्राम में आपको ये समझ आना चाहिए कि यहाँ पे ये वाली जो लेंथ है और ये वाली जो लेंथ है और ये वाली जो लेंथ है, दे आर इक्वल। ओके, दिस इज व्हाट वी कैन से। तो बेसिकली इसको अपन बोलते हैं रेडिकल एक्सिस ना, ये हमारी रेडिकल एक्सिस है। रेडिकल एक्सिस इज ए लाइन जिसके ऊपर अगर आप कोई भी एक पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट का वहां से अगर आप टेंजेंट्स बनाते हैं दोनों सर्कल के लिए, तो दोनों की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन दिस एक्सिस इज length of tangent to two circles are equal. In exam it won't come, you have to find radical axis, but if it is a question given like length of tangent from this point to two circles are equal, then you can write that particular equation as S1 = S2. That line equation will be S1 = S2. उसको अपन बोलते हैं रेडिकल एक्सिस। तो अब इसमें क्या होता है, अपने काम की चीज क्या देखो, द रेडिकल एक्सिस इज, ये जो लाइन होती है ना जो जिससे अपन लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वेट करते हैं, दिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, मेरे ख्याल से तो this is always perpendicular to line joining center of circle. तो यहाँ पे अगर मैं लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल डिफाइन करूंगा, इसमें तो अपने को दिख ही रहा है रेडिकल एक्सिस नथिंग बट कॉमन टेंजेंट, तो डेफिनेटली इट विल बी परपेंडिकुलर। वी कैन सी व्हाट एल्स वी कैन सी, कि अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट को लेते हुए एक सर्कल बनाए, तो देखो ये सर्कल कहाँ से पास करेगा, दैट सर्कल विल पास फ्रॉम हियर इन दिस डायग्राम, it will pass from here, it will pass from here and it will pass from here. This circle will pass from these 2-3 points, one point here, one point here, one point here. और हम बोल सकते हैं this will be the diameter of the circle. So यहाँ पे अगर ये diameter हो जाएगी, क्योंकि ये सेंटर हो गया, रेडियस हो गई, so what we can say is कि अगर हम यहां से इसको ज्वाइन करेंगे, so this angle will be 90 degree. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम यहाँ पे इस डायग्राम से इसमें बता सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का आईटी में जिसमें इस इंफॉर्मेशन को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला गया है। तो उस क्वेश्चन में ये चीज काम आ जाती है, इफ यू लुक एट डायग्राम ऑफ दिस सर्कल टचिंग ईच अदर एट ए पॉइंट एंड उस पे कॉमन टेंजेंट बनाई है, एक कॉमन टेंजेंट यहाँ पे बनाई, यू कैन ऑलवेज सी दिस प्रॉपर्टी दैट दीस थ्री लेंथ्स आर इक्वल, because it's easier, because length of tangent from external point are equal, and if these two lengths are equal, this is the diameter, this is center of circle, if you draw a circle it will pass from here, and if this is diameter, this is 90 degree, again 90 degree triangle. तो ये वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए वहां पे काम आता है। नेक्स्ट यहाँ पे ये है कॉमन कॉर्ड, तो कॉमन कॉर्ड जो होती है उसकी इक्वेशन भी अपनी S1 = S2 होती है। तो लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल इज आल्सो परपेंडिकुलर टू कॉमन कॉर्ड। क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा हुआ है कि इफ
S1, one of the circle, bisect the circumference of another circle. Then common chord will pass through center of another circle. इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है. दिस इज लाइक ए वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन. अगर एक सर्कल जो है दूसरे सर्कल की सर्कमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर रहा है, सपोज दिस इज योर S1 एंड सेकंड सर्कल इज लाइक दिस, दैट दिस इज द सर्कमफ्रेंस. सर्कमफ्रेंस के हाफ पोर्शन यहां है, हाफ पोर्शन यहां. इट मींस these two points are end points of diameter, right? This is end points of diameter. So it means common chord will pass through center of S2. ये लिखा हुआ है. तो यही चीज हमने यहाँ पे पढ़ ली. अब इसके बाद में अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे यहीं से. थोड़ा सा सर्कल का पार्ट बचा हुआ है, लाइक मे बी अराउंड 30-40 मिनट्स. देन वी विल स्टार्ट विद पैराबोला. अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं. अभी क्लास में किसी को डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर अपन वो प्रैक्टिस सेट पे आ जाते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं. इसमें किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो मैं हटा दूं उसको यहाँ से. So, हाँ, so radical axis का यूज फिर से बता दीजिए ना, कैसे हम क्वेश्चन यूज कर सकते हैं. देखो क्या होता है कि रेडिकल एक्सिस जो वर्ड है, इट वोंट बी यूज्ड इन एग्जाम. क्लास में एग्जाम में कभी भी ऐसा नहीं लिखा हुआ आएगा व्हाट इज द रेडिकल एक्सिस. एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि एग्जाम में एक पैराग्राफ डिफाइन कर सकता है. द क्वेश्चन कैन कम इन टर्म्स ऑफ ए पैराग्राफ. जैसे एडवांस में क्वेश्चन आता है पैराग्राफ में, ही डिफाइंस समथिंग फर्स्ट, देन ही यूजेस दैट इंफॉर्मेशन टू मेक 2-3 क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट. तो सपोज अगर वो डिफाइन कर देता है दैट रेडिकल एक्सिस इज समथिंग फ्रॉम, रेडिकल एक्सिस इज बेसिकली ए लाइन. Okay, a line on which if you take any point and if you draw tangents to two circles from that point, then the length of tangent from that point will be equal to two circles. That is basically, so you can take any point on radical axis. Radical axis, it is not necessary circle has to touch, circle has to intersect. Radical axis can be defined as line for any two circles. It's a line like this. And if you will take a point on this line and if you will draw the tangents, and if the length of tangent are equal, so this length and this length are equal, so these points will lie on the locus whose equation will be S1 equal to S2. You can directly find this equation S1 equal to S2. तो हम सॉल्व कर सकते हैं इसको. कैसे सॉल्व कर सकते हैं? If you will take any point H, K and you will write the length of tangent to S1. What will be length to tangent to S1? Under root of H square plus K square 2G1H 2F1K plus C1. That will be length of tangent to 1. Length of tangent to circle 2, if you will write, that will be under root of H square plus K square 2G2H plus 2F2K plus C2. And if you will equate these two lengths, you will get an equation in H and K. That will be 2G1 minus G2H 2F1 minus F2K plus C1 minus C2 equal to 0. This will be the equation you will get, which is 2G1 minus G2H plus 2F1 minus F2K plus C1 minus C2 equal to 0. This is the equation you will get. Now this is a line. तो अब ये जो लाइन है इसी का हम नाम बोलते हैं रेडिकल एक्सिस. इट्स नॉट नेसेसरी कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा यू हैव टू फाइंड रेडिकल एक्सिस. The question can come, you have to find the locus of a point whose distance or whose length of tangent from that point to two circles are equal. That is what we know. So if you will do that, you will get the equation S1 equal to S2. You can directly find that equation by equating these two circles. That is the equation you will get. तो वो आ गया locus. अब इस axis के ऊपर if you will take any 2 points, you can take the points here also. Suppose if I will take the point here, and I will draw tangent. So these two lengths will also be equal. Here the lengths will be equal. Length of tangent will be equal to these two circles. If you will take any point and if you will draw two tangents, so those lengths will be equal to the circles. तो ये होता है रेडिकल एक्सिस. बट इसका जो एक फेवरेट डायग्राम है, दैट इज द डायग्राम ऑफ टू सर्कल्स टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली. If two circles touch each other externally, this is the radical axis because this line equation is S1 equal to S2. That is the same equation of radical axis. So this is the radical axis. So ये हमें यहाँ पे दिख रहा है. इसकी इक्वेशन को देख के we can also see that if you take any point on this, the distance from center of circle, sorry, if you will make two tangents, the length of two tangents will be equal because this is a circle from which I have drawn tangent from external point. Two tangent length will be equal. Here length will be equal. So these three lengths will be equal. So in this case, we can say we can make a circle like this for which this point, this point, this point will be lying on that circle. You can be told to find the equation of this circle. इस तरह से क्वेश्चन आया है. You will see that question, you will understand.
and this line will always be perpendicular to line joining the center of these two circles. If you join these two center, this will always be perpendicular to this, always. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ कंडीशंस होती हैं जिसको ध्यान रखते हैं. इस पे जेईई एडवांस में एक बार क्वेश्चन आया है. कॉमन कॉर्ड का क्वेश्चन आता है, आ सकता है, कॉर्ड पे क्वेश्चन अगर बनाया जाता है तो ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं. बाकी रेडिकल एक्सिस वर्ड कहीं यूज नहीं होगा, इट्स जस्ट अ लाइन. अभी क्लियर है आपको? समझ में आ गया? यस. हाँ, तो बस यही है.